has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स. दिस इज आदि अचिंत. हमारे साथ हैं अरिंदम भाई. टुडे वी विल टॉक अबाउट द रिमलैंड. एंड आपको याद होगा मैंने अरिंदम भाई के साथ करीब 1 साल पहले बात करी थी, वेयर बोथ ऑफ अस हैड अ काइंड ऑफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग दैट ये रिमलैंड में आग लगाएंगे सारे पूरी तरफ. And both of us have been proved exactly right. So, Arindam bhai, namaskar. Welcome to the show. नमस्कार. जय गुरु to you. जय गुरु to your viewers. कैसे है? यार ये बताओ, I mean, firstly you tell me, how does it feel to realize that आग लगी हुई है पूरी? अरे यार, मेरा एक पेट पीव है, पता है ये. मैंने तुम्हारे शो में पहले भी बोला है कि बांग्लादेश को लेके we had said the exact same thing. इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर 2024 का जनवरी का आई थिंक अपना एक पॉडकास्ट था तुम्हारे साथ मेरा, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था अबाउट अ regime change in Bangladesh which eventually happened in August. I had said September, October, August में हो गया. So yeah, रिमलैंड को लेके भी वैसे ही चल रहा है and it's good to be proven true. Unfortunately, events जो हो रहा है that's not good at all. और यहाँ पे थोड़ा सा concern areas भी है. मोस्ट नोटेबली ईरान, जो कि आज के डिस्कशन है. सो या आई मीन ईरान पे तो ऑब्वियसली बात करेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन एंड वी विल टेक अप दिस थिंग. बट यू नो आई वांट टू जस्ट लुक एट माय आई एम जस्ट अपलोडिंग अ फोटोग्राफ एंड आई वांट टू जस्ट लुक एट, थोड़ा सा एक ओवरऑल लेते हैं. यू लुक एट द नॉर्थ, वहां से यूक्रेन से स्टार्ट करते हैं. यूक्रेन में अगर देखो, इन्होंने बोला था हम सेटलमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ. ठीक है, टू अ पॉइंट की वहां पर पूरा शिफ्ट हो गया है. ठीक है, इट इज कम टू अ पॉइंट कि हाँ ठीक है, लड़ना है लड़ो यार, लड़ते रहो, मरते रहो तुम लोग, इट डजंट मैटर. सो यूक्रेन पे नॉर्थ पे दिस थिंग इज देयर. एंड इफ यू नो, रोमानिया के अंदर कचरा ऑलरेडी इन लोगों ने करना शुरू कर दिया है. सो गाइस जस्ट फॉलो द एरोज. ओके, सो द बिग एरो, नॉर्थ में नेटो एक्सपेंशन हो गया है, यूक्रेन का चक्कर चल रहा है, रोमानिया के अंदर कचरा कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं सबसे बड़ा नेटो बेस है. So let's talk about this wala circle. What do you think? Just 2 minutes so that we come to the, you know, क्या series में हुआ, then we can come and talk Iran. Okay. See, Romania and Hungary is in a spot. Hungary तो is in a spot since quite some time, Viktor Orban के बाद से. And Hungary is right now the bad boy as far as Western Europe is concerned, क्योंकि वो इसका बात नहीं सुनता है. रोमानिया को लेके वो इलेक्शन इंटरफेरेंस तो हो ही गया है. हाँ, उसको तो जॉर्जेस को तो शायद जेल में भी डाल दिया है, उसको इलेक्शन लड़ने से भी बैन कर दिया है, क्या कुछ किया है. If you move a little bit into Turkey, then Turkey is going to be in a spot, not now, a couple of years down the line, क्योंकि रिमलैंड में वो भी है. और टर्की को लेके बहुत बैक एंड फोर्थ होंगे, because there is eventually going to come a time in the point in Middle East जब there would be a direct conflict of interest between Israel and Turkey, जो आज नहीं है. आज probably they are seeing a lot of commonality as far as pushing HTS in Syria is concerned. लेकिन eventually regional clout का जब बारी आएगा, जब ईरान को खत्म करने के बाद जो कोशिश करेंगे, then eventually it is going to be a one-on-one again between Israel and Turkey. तब टर्की को लेके बहुत सारा कुछ होने वाला है. I'll just stop you here if you don't mind. तो टर्की को मैंने उसी कैटेगरी में डाला है जिसको हम डालते हैं पाकिस्तान को. ठीक है, तो मैंने 3 कंट्रीज आइडेंटिफाई करी हैं which are being used by the so-called Americans. सबसे पहली कंट्री है टर्की, जिसका नाम हमने रखा है ऑटो मंडी. ठीक है. ओके. दूसरा है पाकिस्तान, जिसका नाम है हीरा मंडी. एंड तीसरा है बांग्लादेश, जिसका नाम है पन्ना मंडी. अच्छा, बांग्लादेश पन्ना मंडी है. अच्छा. ऑटो मंडी से मैंने सुना है अजरबैजान के अंदर ज़ांजिबार कॉरिडोर के साथ अमेरिकन्स अजरबैजान के अंदर घुसना चाहते हैं
जिससे जो चाइनीज सेंट्रल कॉरिडोर है, एंड गाइस जरा नोट करिएगा, चाइना से किर्गिस्तान जाता है, किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान होता हुआ कैस्पियन सी से फिर वो बाकू में जाता है, एंड बाकू से इट्स सपोज्ड टू गो टू यूरोप, बाकू से टर्की जाके इट्स सपोज्ड टू गो टू यूरोप। अगर ये पूरा टर्की अजरबैजान के अंदर अमेरिका घुस गया तो साहब बीआरआई तो गया यहाँ से। इनफैक्ट बीआरआई का जाने का बहुत मतलब बीआरआई लुक्स लाइक इन अ बिग स्पॉट एक्चुअली राइट नाउ, क्योंकि बीआरआई का तुम जिसका बात कर रहे थे, द ओल्ड सिल्क रूट, जो कि सेंट्रल एशिया को ट्रेवर्स करते हुए कैस्पियन सी को पार करते हुए एम्स रीचिंग एट यूरोप, एट द सेम टाइम दैट सेंट्रल एशिया का जो चाइना का सेंटर पीस है, दैट रोड रूट इज आल्सो एट द एंड ऑफ द डे सप्लाइड बाय सीमेक एंड सीपेक। ये दोनों को तो डिस्टर्ब करके रख ही चुके हैं। So again you see focus on Rimland, which is Pakistan, focus on Rimland, which is Myanmar, right? और तुर्कमेनिस्तान में अगर घुस गया यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि हम लोग का डिस्कशन पॉइंट था तुर्कमेनिस्तान के, आई डोंट नो, a couple of days ago there was a very interesting news that came out that Turkmenistan is easing on its tourist visa. हाँ, It used to be a very difficult country to travel to. Now they're easing up on their tourist visa, so more and more Western travelers can get into Turkmenistan. So yes, if we want to, link all of these things together, there is a fair chance that people with different agenda and people with different purposes would keep traveling to Turkmenistan now. हालांकि एक पॉइंट है कि चाइना एंड रशिया आर वेरी फोकस्ड ऑन सेंट्रल एशिया बिकॉज दिस आफ्टर ऑल इज देयर बैकयार्ड, तो इसका कितना क्या होगा नहीं होगा। और वैसे भी हैविंग सेड दैट, if China and Russia's focus falls on Turkmenistan and if West's focus falls on Turkmenistan, then there is going to be a chaos, which is only what the West wants. उसको तो करना कुछ नहीं है ना। चलो, हाँ, इंडिया पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया। कल ईरान का प्रेसिडेंट आया पाकिस्तान में, मैंने उसको सुबह छोटा सा अपडेट करा है, एंड आई सेड इज कि भाई दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक, जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है पाकिस्तान की, घंटे की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, कुछ नहीं है उनके पास, ये उसका रियल टेस्ट है। और टेस्ट क्या है कि भाई अमेरिकन बाउंड्रीज के अंदर काम करना है। और मेरा जो दूसरा पलटा है, व्हाई वुड ईरान एक्सेप्ट दिस? बिकॉज ईरान कहता है यार ठीक है यार, व्हाई डू आई सेंड समबडी देयर, जाके मैं बात बूत करता हूँ, आई डोंट नीड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एंटागनिज्म इन पाकिस्तान। मेरे को अपना ये जो ड्रग्स और मुझे जो स्मगलिंग करनी है वो पाकिस्तान के थ्रू ही होती है। तो वहां से ईरान का भी एक काइंड ऑफ इंसेंटिव है टू प्ले दिस सो कॉल्ड गेम विद पाकिस्तान। अमेरिका का तो है ही है। तो डू यू थिंक दिस इज लाइक नाउ अमेरिका हैज टोल्ड पाकिस्तान, बेटा ये है, तेरे को ये करना है, इसके अंदर तू जो मर्जी करता रहे, इट डजंट मैटर, बट ये 4 चीजें करेगा तो मारूंगा तेरे को। देखो, ईरान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान के साथ जाके थोड़ा सा रिलेशनशिप अच्छा करने का एक और वजह है, एंड दैट इज द बलोची रेबल्स, राइट? बिकॉज Iran is in a walking a tightrope when it comes to disturbances in Iran. Azerbaijani जो है, Azeri से disturbance across their northwest, Kurds से disturbance across their northwest. These things can be synchronized and these things can be used to create a lot of chaos. अगर time मिला तो बात कर सकते हैं. At the same time, while these people are there, the Kurds and the Azeris are there, you also have the Balochi guys. Now, Balochistan is spread across both Pakistan, Iran, and also Afghanistan, Helmand province and all. Iran का ये हो सकता है कि, and now United States is playing a game where it is at the one end, it is pin marrowing the Balochis, especially Jaish al-Adl and Jundullah in the Iran side, and they're going easy on the Balochis in the Pakistan side. Now, the issue is that Balochis, essentially the Pakistan side of the Balochi movement is a violently nationalistic movement. यूनाइटेड स्टेट्स को इस रीजन में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में कोई भी नेशनलिस्ट मूवमेंट उसको पसंद नहीं होंगे। तालिबान के साथ हम लोगों ने देख लिया है
जो पार्टी विच इज अ नेशनलिस्ट पार्टी पावर में आते हैं, उसके बाद दे स्टॉप प्लेइंग द गेम बिकॉज दे स्टार्ट माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, विच इज व्हाट हैज हैपेंड विद तालिबान, विच इज व्हाट हैज हैपेंड विद अफगानिस्तान. Balochi Pakistani side is a nationalistic party, a nationalistic movement. Balochis on the Iran are much more diffused and they don't have a clear agenda. They just want to create problems. Now, if there are two chances, if the Balochis in Iran and if the Balochis in Pakistan come together and they create a larger nationalistic movement, then United States का हो सके उसका तो बेड़ा पार हो गया क्योंकि ईरान प्रॉब्लम में है. लेकिन फिर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रॉब्लम इधर हो जाएगा कि पाकिस्तान से अलग होकर बलोचिस्तान एक अलग सा नेशन बना लेंगे. So United States might use this as a kind of a carrot or stake or whatever you call it to put some scare, put some fear of God into the Pakistanis, saying कि देख अगर तूने इधर से उधर किया, मेरा बात नहीं सुना, जो भी है 4-5 पॉइंट जो भी है, अगर नहीं सुना तो तुमको हम ये बलोची को हम लोग तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे, बलोचिस को हम लोग स्पंट करना शुरू करेंगे. और ईरान को लगा है कि हो सकता है कि ईरान को ऐसा लगा है कि टुमारो इफ बाय cozying up with Pakistan, if there is a hope against hope that together Islamabad/Rawalpindi and Tehran put together can locally contain the Balochi insurgents, then that gives Iran a little bit of a breathing space in this region, in the Balochistan, Sistan-Balochistan region of Iran. So that could be one of the reasons why this meeting took place. Over to you. Somebody said, and I'll just take this at the moment, gas via Turkey and Azerbaijan is fake news. It's actually not. You know, the Israeli gas and oil that the Israelis use, everything comes from Azerbaijan. ठीक है, अजरबैजान से आता है वो ज़ांजिगुर कॉरिडोर से आता है एंड ट्रक्स में आता है, टर्की के पाइपलाइन में घुसता है, टर्की से पाइपलाइन के अंदर इट गोज टू द कोस्ट, कोस्ट से टर्किश शिप्स डिलीवर इट टू इजराइल. आदि उतना भी नहीं है यार. बीटीसी पाइपलाइन ट्रैवल्स फ्रॉम बाकू टू टर्की, वो पाइपलाइन है. ये ज़ांजिगुर कॉरिडोर से आता है. ज़ांजिगुर कॉरिडोर भी छोड़ो, बीटीसी पाइपलाइन ट्रैवल्स 6 वॉर जोन्स. नागोर्नो कराबाख के थ्रू बीटीसी पाइपलाइन जाता है. इट ओरिजिनेट्स एट बाकू, इट ट्रांसपोर्ट्स Caspian Sea gas in Turkey, and from there it's a very expensive project, but it is there. फेक न्यूज का कोई बात ही नहीं है. और आगे भी ऐसा है. ये तुर्कमेनिस्तान का जहां तक, हाँ, तुर्कमेन का जहां तक सवाल है, तुर्कमेनिस्तान का तो वो ट्रांस अफगान पाइपलाइन तो फ्लॉप हो गया तालिबान के टाइम में. वो नहीं चला. उसके बाद क्या हुआ है, तुर्कमेनिस्तान के पास फ्रेश प्रपोजल आया है फ्रॉम द वेस्ट की वो कैस्पियन सी के अंदर से अंडर वाटर लेके जाएगा और साउथ कॉरिडोर, साउथ गैस कॉरिडोर विच इज दैट बाकू टर्की कॉरिडोर, वहां से तुर्कमेन गैस को यूरोप में सप्लाई करेंगे. सो तुर्कमेनिस्तान हैज गॉट अ रीजन टू लाइक काइंड ऑफ लुक इनटू ऑल ऑफ दिस फेवरेबली. या और तुर्कमेनिस्तान इंटरेस्टिंगली अगर अपने आप को इस पैरेलल सेट करता है, सो यू कैन इमेजिन रशिया का और चाइना का ये लोग कट करने की कोशिश करेंगे एक्सेस टू ईरान, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. बट बिफोर वी कम टू दैट, आई वांट टू कम अक्रॉस कि भाई अभी हम ईरान की तरफ आ गए, इंडिया पाकिस्तान देख लिया, हमने देखा म्यांमार में गड्ढा चल रहा है, बांग्लादेश इज ऑन फायर, एंड सडनली ब्लडी थाईलैंड कंबोडिया एक्सप्लोड्स. हाँ, मैं इसकी आंख ये कहां से शुरू हो गया. एंड बेस्ट थिंग इज कंबोडिया में इकोनॉमिक्स में चाइना इज फुल्ली इन कंट्रोल. Politics में fully America is in control. To a point, Cambodian president ने Donald Trump को Nobel Peace Prize. मैं बुलाते हैं, ये देखो. This is called मतलब shot पे shot. तो do you think this, ये जो मैंने series of ये red arrows इस तरफ बनाए हुए हैं, ये इधर से they travel east, और ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसके बाद पहले जो बीच का एरिया बचा है उसको उड़ाएंगे, फिर ईस्ट यहां से ट्रैवल होगा. व्हाट इज योर ओपिनियन? आई थिंक दे विल ट्राई सब जगह पे, जहां जहां पे हो सके, बिकॉज आदि ये जो पॉइंट तुम दिखाए हो, सी यूरोप के जहां से वो ब्लैक लाइन ट्रैवल कर रहा है तुम्हारा, दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ नोड तो नहीं बोलेंगे, दैट इज अ पॉइंट विच कैन हिट द BRI, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की. ईरान से तुमने फिर वो लाइन को ट्रैवल कराया है. ईरान इज चाइना's पार्टनर, एक्टिव पार्टनर. ऑल द ऑयल ऑफ ईरान गोज टू रशिया, टू चाइना. ओके, उसके बाद बलोचिस्तान से वह लाइन जाता है, ठीक है, तो हम लोगों ने कवर कर लिया है. बांग्लादेश में चाइना हैड इंटरेस्ट, और नहीं भी रहता तो भी बांग्लादेश को म्यांमार में यूज करेंगे वो रोहिंग्या रेफ्यूजी को देके.
Now you move to Cambodia and Thailand. हालांकि थाईलैंड के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का फोकस ज्यादा रहेगा, बिकॉज वो थेरावाड़ा बुद्धिज्म और तिब्बत को लिंक करने का एक बहुत बड़ा चांसेस है, and which is why they are focused. So in all possibilities, this black line that you have drawn, which is the current rimland, looks like that all roads lead to Rome jaisa. All of this is going to be pinpointed against containing China, weakening China in whichever way Fantastic. possible. यही this is the point. This is the grand point of it. But you know, China का containment is of in 4 directions. अगर आप देखिए, ठीक है. So let's just say north, east, west, south, and China सबको यहाँ पर मैप में दिख रहा है. तो नॉर्दर्न चाइना की तरफ आपको जाना है, मंगोलिया एंड रशिया की तरफ आपको कंटेन करना है उसको. वहां पर खैर अभी खुला है पूरा. नॉर्थ ईस्ट में देखें तो आपका वो नॉर्थ कोरिया, ठीक है. नॉर्थ कोरिया इज नाउ सिटिंग विद रशिया. आई थिंक अमेरिका वुड लव दैट, क्योंकि चाइना के साथ नहीं है तो ओके. वहां साउथ कोरिया, जापान आपने बिठा रखा है, ताइवान बिठा रखा है, फिलीपींस है, सारा कुछ ये पूरा दिस इज बड़ी मिलिटराइज्ड बाय अमेरिका. तो ये पूरा कवर्ड है. इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर अमेरिका घुस गया है, जैसे आप बोल रहे हो म्यांमार के अंदर, ठीक है. एंड अमेरिका इज ऑल्सो री एंगेजिंग इन थाईलैंड नाउ, ऑब्वियसली, ठीक है. तो यहाँ पर भी बैठ गया वो आके. इंडिया के साथ कोशिश कर रहा है. इंडिया इज नॉट टेकिंग द बक, ठीक है. बट अमेरिकन्स कैन बी श्योर दैट इंडिया विल नॉट हेल्प चाइना एज वेल, यू नो. तो ठीक है, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर. हाँ, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर. तो यहाँ पर भी आपका बैठ गया. पाकिस्तान को आपने ब्लॉक कर दिया. अब जरा स्विंग अप नॉर्थ करते हैं. तालिबान, फेयर इनफ. आई मीन चाइना से ज्यादा दे आर वेरी लॉयल टू अमेरिका. लेट्स नो दैट वेरी फैक्ट एंड ऑल ऑफ अस नो इट. तो ठीक है. तो मेरे हिसाब से द नेक्स्ट राउट should not happen in Southeast Asia. The next route should happen between ये जो कैस्पियन सी एंड मंगोलिया. ये जो पूरा एक, अगर आप एक बॉक्स बना दो which starts let's say कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, you know, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, एंड ये रीजन के अंदर अगला कुछ चक्कर होगा, because this blocks China's trade completely. आपने तेल भी कंट्रोल कर लिया. नाउ द तेल अगर आप यहां से कर लो तो चाइना विल हैव टू ओनली टेक इट्स oil from the ocean. And by then if you have Myanmar under partial control and a little bit of bases built around Thailand, you can block the Malacca also. So you essentially screwed China's sea route as well. CPEC तो तुमने मार के रखा है. आप मुझे ये बताओ साहब, किधर फटेगा क्या? Is this now the next explosion in Central Asia? कि भाई ये जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं उस तरफ चलते रहो. मेरे ख्याल से ना, जो मैंने पहले भी बोलने का कोशिश किया कि ये साइमल्टेनियसली बहुत जगह पे चलाएंगे. ये थाईलैंड, कंबोडिया में भी चला रहा है, ये ईरान में भी चला रहा है, ये तुर्कमेनिस्तान में भी घुसने का कोशिश कर रहा है. कजाकिस्तान में बहुत सारे एनजीओ ऑलरेडी बैठा है, एक्टिविस्ट ग्रुप बैठे हैं, उइगुर का सेपरेटिस्ट लोग वहां पे बैठे हैं, उसको कजाकिस्तान शेल्टर देके रखा है. इवन दो कजाकिस्तान इज हेवीली अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन अलायंस ऑफ स्टेट एंड इज थिक विद चाइना एंड इज थिक विद रशिया. तो अभी because there is an apparent lack of coordination between what Trump team thinks and what the United States defense establishment, ये जो सब हो रहा है, ये defense establishment का पुराना वाला plan जो है, which is in action. I don't think Trump has that much of a say in all of this. तो ये जो अभी ये दोनों का थोड़ा सा भी एक coordination में कमी है, इसको लेके probably they are moving haphazard and they are trying to light up as many areas as possible. Would there be an explosion kind of a thing in near future or midterm future? I honestly think कि हम लोग explosion तो नहीं देखेंगे, but there is going to be protracted छोटा मोटा kind of flashpoints all around this rimland, because the idea is, again, going back to what we usually say, that America is situated across the other side of the world. It doesn't really matter to them what happens here, as long as this whatever is happening disrupts countries like China or India or Russia. They are happy and they would be readily doing that. अब आज को मान लो हम लोग अभी यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस एटसेट्रा एटसेट्रा. आज को अगर Iran, if Iran descends into chaos, because we were talking about Iran, if Iran descends into chaos, imagine how big an advantage that is going to be for the United States / Israel. उसी को कैपिटलाइज करके ये लोग का 10 साल निकल जाएगा. The kind of money that they are going to make, the kind of business that they are going to do,
if a Ben Gurion channel tomorrow suddenly props up as a reality through Gaza, which by the way will happen, which I is going personally to think will happen. वो if होगा. that happens, then you're anyway running Persian Gulf half out of business, because then Iraq and Kuwait and everybody's oil goes through there. अगर वो हो जाता है, and all of this is coming at the expense of destabilizing Iran, and or even if it is not destabilizing, you're just taking Iran to a point where they say कि भाई हम लोग इसमें साबोटाज करेंगे. पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें साबोटाज तो करा सकते हैं, हुती कहीं से किसी से भी, कोई भी प्रॉक्सी से भी. They are absolutely fine with it. बेन गुरियन चैनल बन जाएगा, एक तरह से पर्शियन गल्फ को खा रहा है, एक तरह से सुएज कैनल का बिजनेस खा जाएंगे, because then the Europe Asia transit is going to happen through Ben Gurion Canal. That sort of reduces Egypt's revenue into, I don't know, half, 1/3, 1/4, पता नहीं कितना reduce कर देंगे. So even if it is a small thing like Iran which happens today, that is going to provide them with a windfall which is going to last them for the next 5-10 years. So इसके अब किसको पहले, going back, किसको पहले करेंगे, किसको बाद में करेंगे, I don't know if they have their priorities in place, but I have a feeling that they are going to try and move across, which they are doing, moving across all of these places. At the one end, they're moving in Arakan, moving in Myanmar. At the one end, they're moving in Cambodia. At the one end, they're moving in Iran. They're moving across all places. जहाँ पे हो जाए वहाँ से शुरू करेंगे. ऐसा ही कुछ है. Because यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगा, whenever you see this sort of a game happening, I kind of, मेरे को ऐसा दिखता है कि the game will be of the trade routes. जितना आप ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल कर पाओगे या चोक पॉइंट्स या नोड्स पे आप कंट्रोल कर पाओगे, उतना आपके लिए इजी रहेगा टू काइंड ऑफ प्ले द फ्यूचर गेम. तो अगर आप इवन इफ यू आर लेटिंग द ट्रेड थ्रू, बट इफ यू आर डोमिनेटिंग दैट एरिया, वो काफी होता है टू टेल योर एडवर्सरी कि यार देख अभी जा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ मी जा रहा है, मैं किस दिन रोकूंगा वो मेरे ऊपर है. सो दैट एक वो थ्रेट जो होता है ना, वो काफी जबरदस्त थ्रेट होता है. That is the game. If I control Malacca Strait today, I don't need to tell China to behave. They'll behave on their own. That way, if I have created an alternate route which obliterates the necessity of a Strait of Hormuz, Persian Gulf, and which also does away with the necessity of a Suez Canal, I don't have to tell anyone to behave. वो ऐसे ही मेरा बात सुनेगा. So yeah, what you said is absolutely right, and that in a way is me controlling all the shipping routes / trade routes / everything. अच्छा, ट्रेड रूट का जहां तक, अच्छा ये इसको मैंने कंट्रोल कर लिया. अभी ऑल्टरनेट क्या था, चाइना कुछ बेल्ट एंड रोड बना रहा था, उसको मैंने साबोटाज कर दिया है, तो फिर रह किया जाता है. So it's back to my Pax American dominance once again. नहीं, पैक्स अमेरिकन डोमिनेंस तो बढ़िया है सर, वो तो मेरे को समझ में आ गया. But how feasible is it to actually maintain this for America? Not possible. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि chaos लगेगा, chaos चलेगा, और chaos चले, and that is one thing which dovetails a little neatly, a little nicely with a little bit of this American isolationist policy. वो अपना वहां पे बैठा है मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन बना के, वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना सेक्लूट करके, जितना भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, ऑयल एंड गैस भेज बूझ के जो भी कर रहा है with a little bit of technological, they are trying to play this, they are trying to integrate this consumer AI into defense, and they are trying to make a big deal out of it. उसको बेच बूझ के चलाते रहेंगे, and they are going to make sure by creating protracted and never ending chaos in this side of the world, so that none of this guys, a China or a India or a Iran or a Russia, rises up to that level where they can sort of establish their regional hegemony like the Americans have done before, like the Americans are aiming across the Western Hemisphere. उसको जब भी बनने का वो आएगा, नौबत आएगा, they are going to create these disruptions. And what we see today is just that. They have seen that China is getting too big. They probably don't know how to handle that, because the entire logistics and supply chain and everything is dependent today, hopelessly dependent on China. So they probably want a China which is still a manufacturing giant, but a China that listens to them.
उठने बोलेगा तो उठेगा, बैठने बोलेगा तो बैठेगा. And this is probably what they are trying to do. So they are going to disrupt. They are not necessarily going to remain in charge like the way they used to back in the 50s and back in the 40s. But they still have a sufficient kind of a reserve, and they're still probably trying to use technology to gear up for the future so that they can still continue, they can still sustain themselves, even when they are not in physical control of the entire world, so to speak. Now, I just want to kind of bring in the tariffs also यहाँ पर, जो इंडिया के ऊपर tariff चल रहे हैं, because I really don't think it is just purely trade based. There is a, there is a difference. And so what is your analysis on the tariffs? अभी तक तो लगा नहीं है, आजकल सारा चलता रहेगा. And somebody is telling me कि ये 30th तक और extend करेगा. अच्छा. Tariffs को लेके ना, I am a little confused tariffs को लेके, because there is some amount of influence of certain economists on Donald Trump, and there's this paper which was apparently submitted sometimes in November or December 2024 that sort of reorganizing the global trade. Yeah, tariff के through वगैरह ये सब जो था. I think this is honestly I've read that, and it says exactly what he's doing. So this is this paper's influence on Donald Trump. I don't think he has got bigger players backing him. I don't think he is even consulting with other players, other people who are there. Maybe his own team, maybe his own core team, whoever he has there. And that's just about it. So I don't see a well thought out process. I don't see a very deep entrenched kind of a vision जिसके लिए ट्रम्प ये कर रहे हैं, with a larger idea that okay, I put 25% today, I put 2% tomorrow, this is what is going to happen, I do a little bit of flip flop, this is what is going to happen. A lot of people are saying that there is a game plan there, but I personally don't think there is a game plan as far as this tariff is concerned, because his only thing is that I want to create that trade advantage of United States over rest of the world. Hence he is doing that. But how do you kind of figure this, that, and I'm not talking just about India, because आप यार दोस्तों के साथ ही लड़ाई कर रहे हो भैंस क्या, कहीं तो एक तो पकड़ ले भाई जो तेरे साथ बैठेगा, किसी को तो पकड़ ले दुनिया में. Are you trying to say पूरी दुनिया तेरे को लूट रही थी, तू ही एक बेचारा बच्चा था पूरी दुनिया के अंदर? Nobody is going to buy that. Yeah. Right? Nobody's going to buy that. So what? एक को तो पकड़ ले. What do you think? I think this is only going to hasten the coming of a multipolar world order. The New York Times has already come out with an article where they are saying Trump initiated this, to which my reply would be no, Trump has just opened this whole thing up. And ये जो trade war, जो tariff war जो चला रहे हैं, इसमें you are pissing people off. You're pissing a lot of, even European Union is pissed. You've pissed off India, you've pissed off China, you've pissed off people who are even powerless in front of you. They are listening to you because they don't have a choice. So ऐसे करने से what you're doing is, now you've got India, Russia and China thinking of reorganizing. You've got de-dollarization जो बात चल रहा था, जो कम हो गया था, वो फिर से अभी फुसुर शुरू हो गया है. So what you're doing is you are giving all of these regional powers, those who had छोटा reasons or बड़ा reasons, to be thinking about creating a unit, thinking about creating an alliance of their own. You're giving them all the more reasons to start rethinking along those lines. So I don't see a good thing, at least if I speak from the point of view of the United States, I don't see a very good thing coming out of this tariff thing which Donald Trump is doing. Is he doing because अंदर में वो भी यही चाहते हैं कि several points of power, so that not us, so that there is no global elites controlling the whole thing? If he really wants that, then he's doing a great job. If he doesn't want that, ideally अगर आप ideally देखो, कोई दिमाग वाला US president आए, वो बोले यार देखो ऐसा है, I can't do this anymore, okay, I can't patrol this thing. So fair enough, मैं एक काम करता हूँ, let me create a link of not alliances but extremely strong partnerships, regionalized partnerships,
जिनको मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बोलूंगा, बट जिनके थ्रू मैं वहां पर अपना डोमिनेशन रखूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैप को देखो, एंड लेट मी जस्ट पुट द सेम थिंग अप अगेन बिकॉज द गेम इज ऑफ एशिया. ठीक है, तो अगर आप देखो ऊपर स्वीडन नॉर्वे आपने पकड़ा, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल. ठीक है, इधर पे आपके पास बीच में इजराइल है, सऊदी है. ठीक है, इंडिया के साथ थोड़ी बहुत बना के रख लो यार, बेस बूज ना दे यार, बट यू नो बी ऑन माई साइड सॉर्ट ऑफ अ थिंग. इधर पे आपने बीच में इधर पे विच आर द चोक पॉइंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड देन यू हैव द यू नो मलेशिया एंड दिस दैट. यहाँ पर आपका पूरा गच्चा है. सो फॉर दैट आल्सो यू नो इंडिया इज अ गुड प्लेयर एंड यू ब्रिंग इन जापान एज अनदर प्लेयर. ऑस्ट्रेलिया है वहां पर. So you should be able to work with few countries, for example, the Northern Bloc, the Arctic Bloc, the Middle Eastern Bloc, which is if you get the जो आपका Israel and Saudi Arabia I2U2 type यहाँ पर कुछ एक अफेयर जो आपका चल रहा है already, there is an established security platform, उसको आप वहां पर चिपका दो. ईस्ट में आपका क्वाड शॉट ऑलरेडी बैठा हुआ है. ठीक है, उसको उसका एक मिलिटराइज वर्जन आपके पास ऑकस शॉकस भी है, उसको आप थोड़ा बहुत जो भी है चलने दो. You should be able to actually do this very easily. एंड देन नॉर्थ में तुम रशिया के साथ बोलो कि भाई चल यार दोस्ती करते हैं, ये चाइना को छोड़, तू मेरे साथ बात कर. आप बड़े आराम से कर पाओगे. मल्टीपोलर, एंड देन यू गिव पावर्स टू यू नो ब्रिंग इंडिया अप इनटू द सिक्योरिटी काउंसिल वेयर यू वांट देम. ठीक है, but he's not showing that intent ना. प्रॉब्लम यही हो गया. yeah, he is not showing the intent भाई. प्रॉब्लम यही हो गया है. if you are really focused on the Scandinavian countries and if you are really focused on that central part of Europe जो जहां से लाइन जाता है, which probably includes Poland. yes, Poland को लेके यूनाइटेड स्टेट्स का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, but that too Poland को लेके इंटरेस्ट है because Poland thinks that Poland is war ready and Poland is investing in buying United States defense wear. इसीलिए वेस्टर्न यूरोप से उसका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया. अभी लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यह सब जगह पे आ गया है. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो फिर उसी हिसाब से तुमको इंडिया पे भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था, व्हिच इज नॉट शोइंग. और आदि, व्हाट यू आर सेइंग इज अ सॉलिड पॉइंट, बट एक चीज ये भी है, हिस्टोरिकली ना ब्लॉक्स जो बनते हैं वो प्रॉक्सिमल कंट्री से बनते हैं, पीपल हु हैव दैट एक्सेस बिटवीन ईच अदर. तो तुम इतना यहाँ पे एक, वहां पे एक, वहां पे एक करके तुम बेस बना सकते हो, which can help you during a war, but to organize and to do trade efficiently and to kind of sort of economically and financially dominate the world, you need a little bit of continuity. या तो तुम कल्चरल कंटिन्यूटी रखो, या तो तुम वो क्या बोलते हैं, जूडियो क्रिश्चियनिटी जो वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स को एक रखा था, उसका कंटिन्यूटी रखो, आइडियोलॉजी, रिलीजन स्लैश व्हाटएवर कंटिन्यूटी रखो. या तो तुम फिजिकल कंटिन्यूटी रखो, like Russia and China today, despite their differences. अच्छा ही ब्लॉक है, तो कुछ तो एक कंटिन्यूटी रहना मांगता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. नो, बिकॉज यहाँ पर मेरे को एक ही चीज दिखता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल देखो यार, इसको कहीं ना कहीं अगर इसको ही हैज टू बी प्लेइंग द पार्ट ऑफ द. अच्छा यार, यहाँ पर एक सेकेंड इफ यू डोंट माइंड. हाँ यार, तुम लोगों ने उसको क्या क्या करते हो यार. एक बेचारा पाकिस्तानी आता है हमारे पास, मेरे मॉडरेटर्स उड़ा देते हैं उसको. मैं जरा थोड़ा मजाक बनाने वाला था उसका, चलो कोई बात नहीं, अब उड़ा दिया उसको. जस्ट किडिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग द चैट ब्यूटीफुली क्लीन. मैं बेचारा स्पेंट यू नो ही सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है, ही स्पेंट 5 मिनट्स सिटिंग देयर waiting for the timer to go off because you know once you subscribe it takes 5 minutes for you to enter the chat. तो बेचारा 5 मिनट बैठा to say पाकिस्तान जिंदाबाद. उसने ये लफ्ज निकाले होंगे. he might have felt said yeah and my moderators went उड़ा दिया उसको. तो गया वो. तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, बट देखो 5 मिनट वेट करता रहा वो, and 5 minutes waiting for something like this is quite a bit. Right, Pakistan Zindabad, yeah, that takes quite a lot of spirit. Oh boy, what jokers. Okay, coming back. So when you 5-minute hoories, somebody said. So when you look at this in the entire game, पूरे context में अगर इसको आप डालें, तो you still believe Iran Central Asia is the next flashpoint. अगला जो उड़ेगा will be this only.
साउथ ईस्ट एशिया में अगर कहीं अपॉर्चुनिटी और मिल जाती है, वेयर आई ट्राइड टू सी the only other opportunity is where if Vietnam and Cambodia go in for something, because एक पहले वहां पर हो चुका है, where when Vietnam wanted to wrap Cambodia across the face, then Chinese came and helped them, and then Chinese got it across the face. वो एक गेम है जहां पर एक और जगह आग लग सकती है. साउथ ईस्ट एशिया में अगर और कहीं आग लगेगी तो साहब फिर तो वो चाइना ही है. So what do you think is happening? I think coming back again to Iran. Just Why? Because kind of a wrap up. because Iran is already damaged. ईरान को डैमेज कर चुके हैं, अब करके ये लोग छोड़ने वाले नहीं है. That is why I am telling you. And Iran has got a restive Azeri population. Iran has got a restive Kurdish population. Iran has got a restive Balochi population. It has got those old communist, socialist Turkmen guys still living across their eastern region of Iran. And what you need to do is you just need to, अगर तुम simultaneously ये सब, why I am going on talking about Iran is, अगर तुम ये सबको अगर simultaneously तुम कर देते हो, you coordinate this group, you spark a simultaneous insurgency, northwest से southeast से आज़ेरी को लेके तुर्कमेन को लेके ये करो, IRGC is going to be stretched thin. If IRGC is stretched thin, IRGC का है 1.5 लाख पता नहीं कितना है, they were 150,000 people, but simultaneous insurgency of Kurds and Balochi and Azeri and ये सब जितना भी है, इसको प्रॉब्लम, इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे. साथ में ईरान इज वीक, इसको डैमेज कर चुके हो. इफ यू कैन इनिशिएट, एंड आई एम श्योर दैट दे आर गोइंग टू डू दैट, यू कैन इनिशिएट एलीट डिफेक्शन. एलीट जो है उसको पैसा दो और भगाओ. 30 to 50% ऑफ ईरानियन गैस को तुम डिस्टर्ब करो, राइट? और क्या चाहिए? ईरान्स इकोनॉमी इज वीक ऑलरेडी. 40% इन्फ्लेशन वहां पे है, सैंक्शन वहां पे है. ऑयल को अगर तुम डिसरप्ट कर सकते हो, ऑयल को खुद ईरान, व्हाई डिड ईरान डू सो मच ऑफ पंप एंड शो अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि खुद मर जाएंगे. अगर तुम कर देते हो, टोटल ईरान का अभी जो जीडीपी है, तुम अगर ये सब कर कुरा के, इफ यू कैन मेक you can create a drop of 10 to 15%, that is good enough for a color revolution. Let me tell you, that is good enough for a color revolution. Urban protest का already 2022 का ईरान में protest हो चुका है, and आज के दिन में कितना भी ईरानियन अपना पर्शियन, अपना यूनिटी दिखाए, 2022 का protest में the fault lines were very clearly visible. They know that they have those fault lines. I don't know how far they are from the tipping point, but they have studied it at least twice, thrice in the past. They have created a lot of weaknesses for Iran over the past few months, and there is no reason why they would want to let that go. Vis-a-vis doing it all over again in Thailand and Cambodia, which has only started. Thailand and Cambodia, maybe 6 months down the line, if this persists, sure, why not? But आज के दिन में the first place that they're going to target is probably going to be Iran. That's what my thing is. That's what my guess is. Fantastic, and that's what we wanted to. Yeah, Iran, and target it through the region after that. So they will need to meddle in Central Asia. They'll need to meddle in the Persian Gulf. They'll need to meddle in all these areas. And वही हम लोग देख रहे थे when today. That's what I wanted to kind of put across. मैंने जो सुबह भी अपडेट डाला है कि भाई पाकिस्तान, a lot of people got surprised कि यार ये तो पाकिस्तान तो अमेरिका की गोदी में बैठा है, then how come the Iranian president came there? People didn't realize that is part of the game. I mean, it's basically America telling Pakistan, ठीक है, तू उसके साथ engage कर, but these are the red lines. This is what you need to, which you should not cross. और एक चीज और है आदि, हम लोग इसको लेके बिल्कुल बात ही नहीं की, सेंट्रल एशिया को लेके बात करने के टाइम में, which is ISKP. तो एक और we'll take another 4 minutes and 5 minutes हमारे पास हैं before we start questions. So tell me, what's up with ISKP? एक और पप्पू बैठा है ना, अपना टेलीग्राम चैनल, अपना सोशल मीडिया चैनल, अपना ये सब हैशटैग, अपना फोन बेस्ड ऐप, ये सब लेके दे आर डूइंग देयर दिस थिंग प्रीटी वेल अक्रॉस सेंट्रल एशिया, स्पेशली इन क्या बोलते हैं उसको, अजरबैजान तो नहीं, ताजिकिस्तान, सॉरी, स्पेशली इन ताजिकिस्तान.
So ISKP is a damn good cat's paw for United States to spread unrest in the Central Asian region. And if unrest is my core focus, I don't give a shit about building anything. If unrest is my core focus, I can do that through ISKP. अगर कल को मैंने वो ओल्ड तुर्कमेन सोशलिस्ट को तुर्कमेनिस्तान से सपोर्ट करके इफ आई कैन इंसाइट देम अगेंस्ट ईरान एंड इफ आई कैन ब्रिंग अबाउट द कलर रेवोल्यूशन इन तेहरान, रजीम को चेंज कर दिया, कोई भी आए प्रॉब्लम, उसका मतलब नहीं है. मतलब ये हो रहा है कि नाउ आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ कंट्रोल ओवर ईरान. So now I have a better control than across the sea over Turkmenistan. I can create problems from that state as well. So now I have got two players, ISKP and the Turkmen ground, to stir problems in the Central Asian region. And I can always push Turkey, who has got that Central Asian East Turkestan wala dream, to Zangezur corridor and push them to do business. बिजनेस करोगे या तुम आर्म्स सप्लाई करोगे या तुम टेररिस्ट सप्लाई करोगे, जो हम कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा. सो आई हैव अ टर्की. सो आई हैव 3 प्लेयर्स using whom I can create problems in Central Asia, and ISKP is just one of them. Over to you. ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था, so I just thought I'd share. Fantastic. मैं थोड़ा सा उसमें मसाला फेंकता हूँ. There's a counter force to ISKP, which is BLA. BLA ने पिछले 1.5 महीने के अंदर ISKP के they've put a stick in the right places, man. And trust me, I have never seen ISKP handles going victim card, मार रहे हैं हमको, ये मार रहे हैं साले, आगे बलोच मारते हैं. They're literally doing that, and I'm like, ये पागल हो गए हैं क्या यार? Now उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. So if Balochis are kind of throwing out ISKP from there, ISKP will need to find a new spot to sit. You know, ISKP does not want to say कि भाई हम यहाँ बैठे हैं. अब वो बैठे हुए थे पूंछ के एरिया में, that you know, in that pointy area in bloody Pakistan, in south में, in that pointy area they were sitting there. Balochis threw them out. Get lost from here. ये कहाँ जाएंगे? देखो, अगर ISKP कल किसी भी तरह let me finish. अच्छा, sorry. नहीं, my apologies. खोरासान मैगजीन ने कल एक आर्टिकल डाला है, ठीक है, वॉइस ऑफ खोरासान जो इनका ट्विटर हैंडल और ये सब है, उसने बोला है कि भाई अफगानिस्तान प्राउडली सेज देयर आर नो ISKP कैंप्स इन अफगानिस्तान. मैं बोला अच्छा, फिर ये कहाँ जाएंगे? क्या हो गया भाई? हाँ, now can you see me? हाँ, अभी I can see you. हाँ, फिर से बोलो. You have to repeat what you said last 1 minute. मैं बोल रहा हूँ, अगर ये बलोचिस्तान से भगा दिया इनको यहाँ पर, जिनका यहाँ पर मेन बेस था, मेन बेस वहां पर बन्नू चन्नू के नॉर्थ में भी कुछ एरियाज में इनका था, जहां पर which is completely free. I mean, there's no one there. Where will they go? Where will the next base of ISKP be? अभी इसको लेके मैं थोड़ा सा एक घुमा फिरा के एक रिप्लाई करूं. देखो, ISKP या ISKP का एग्जिस्टेंस या ISKP का सस्टेनेंस, इफ आई वर यूएसए, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है as long as I get a substitute for ISKP in this region. ओके, 10-15 मिनट पहले हम लोग बात कर रहे थे बलोचिस्तान को लेके. BLA मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आई एम स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स. BLA मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तब तक जब तक BLA नेशनलिस्टिक मूवमेंट करेंगे. कल को अगर मैंने BLA को चूना लगा के, इफ आई ट्रांसफॉर्म, नाउ अंडरस्टैंड दिस, दैट अ नेशनलिस्टिक मूवमेंट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस टू मी. व्हाई? बिकॉज वो नेशन स्टेट बनाएंगे, वो फिर से वही घिसे पिटे रट में चले जाएंगे. फिर आई हैव टू बैलेंस बिटवीन बलोचिस्तान एंड पाकिस्तान, व्हिच इज माय 50-year-old फ्रेंड. नाउ सडनली पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा बिकॉज बलोचिस्तान का सी एक्सेस है. On the other hand, if I can mutate the Balochi rebels to rally for a larger cause like an international jihad. So आप लोग को बलोचिस्तान चाहिए, हम लोग बलोचिस्तान से भी ज्यादा देंगे. हम लोग पाकिस्तान में बलोचिस्तान देंगे, हम लोग अफगानिस्तान में आपको हेलमंद देंगे, हम ईरान में आपको ये देंगे. ये करके if I can morph them into a more internationalist, transnational jihadi movement, then boss Aadi, I would get a kind of a gold mine in my hand for which I don't need the ISKP in future. Why I am saying this with all this confidence is just look at what they have done to the Kurds.
Kurdish autonomy now is not about Kurdistan single country. It used to be during the 80s. Now they are fighting in Syria, they are fighting with Turkey, they are fighting in Iran. They have got a problem everywhere. And depending on their regional and their jihadi ambition, United States is deciding whether to help them or not. Kalko, and mark my word, Kalko, if Kurds अचानक से they fizzle down and they decide कि नहीं हम लोग को नॉर्थ ईस्ट सीरिया में एक कर्दिस्तान चाहिए, we've got nothing to do with Iran, Turkey and no one. तुम देखना पूरा हाथ उठा लेगा अपना कर्दिश इससे मूवमेंट से. They are of use to United States as long as they retain their international jihadi image. तो अगर coming back to answer your question, अगर ISKP को हटा के if I am seeing the Balochis taking up their position tomorrow as international jihadists, ISKP था, आज नहीं है, आज बलोची आ गया है, कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो जाएगा. So that's what. I can't hear you. Oh, sorry. मैं बोल रहा हूँ, all भी groups हैं, Jaishul Adal and all these people are there. So these are all Balochi groups. Yeah, one could use another this thing. All right, let's get into some questions. Arindam bhai, thank you for that. And guys, Arindam साहब की एक किताब आ रही है, इसकी ऊपर हम लोग बात करेंगे. Of course, we will talk about the book, but would you like to just spend a minute to talk? कब आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? थोड़ा intro तो दे दो यार. Yeah. Okay, so this book is launching sometimes during the 3rd week of August. इसका pre-booking हो गया है, open हो गया है, so you can order through Amazon. The name of the book is Contours of the Greater Game: Access, Control and Geopolitical Orders. This book is something which, a part of this book is something which me and Aadi bhai, we've had discussions about. बहुत सारे times हम लोग का discussion हुआ है regarding global orders and all. But this book elaborates the entire thing. You know, where did this idea of access and control come in from? Who all are the proponents? This Rimland, Heartland लेके जो हम लोग बात करते हैं, details about that. फिर कौन-कौन किस-किस को influence किया? How did, you know, the West, which did not have a problem with Hitler, suddenly turn against Hitler all of a sudden? And why did Hitler, who did not have a problem with Russia, Molotov-Ribbentrop pact किए थे, suddenly go and attack Russia, losing everything? पूरा mind अपना दिमाग में खोल के. So, lot of interesting things. Apart from that, that is just one part of it. The other part of it, how you use different ideologies as control tool, where we talk a lot about, you know, hierarchy of competence and hierarchy of power, and what happens on the top of the hierarchy, what happens at the bottom of the hierarchy, how you can exploit those people, how you can utilize those people. Then we talk a little bit about global order. And finally, this last section of the book is where I talk about going forward. Now that India has stepped up and is stepping onto the geopolitical chessboard, how should India play its game? How should India play its game at the one side, and at the other side, what are those things which pull us back? What are the things on which we need to have a control? And these are not, black and white concrete things that I have discussed. I have talked a little bit about things like identity, things like lack of strategic mindset, etc., etc. What are the things that pull us back, and what are those things that we need to take care of so that we can go ahead and play the game full-fledged? Overall, I would say this is a book which brings probably for the first time in India, brings a Eurocentric approach into the subcontinental readers. हम लोग तो अभी का जो approach है, it is very India-centric approach. Okay, we have over the past 5, 7, 10 years, we have learned to see the way, we have learned to look at the world from an Indian perspective. Now, if you are to understand geopolitics, if you are to get a overall mega, क्या बोलते हैं उसको, macro picture of geopolitics, you have to understand it from a Eurocentric perspective as well. Why? Because it was Europe that intruded upon the rest of the world and created all of this. तो उसका point of view आपको समझना है before you dive into Chanakya Niti, before you dive into Arthashastra and try to make sense and try to find out how India can counter them. So that's all this book is about. I'm sure you would like it. Let me know. Can you rename it? Somebody's asking Contours of the Great Game, right? Greater Game. Contours of the Greater Game. Access, Control and Geopolitical Orders. That's the full name. Yeah, if anybody, it's easier to find the book with the author. Don't search for the title.
look at the author, search the author. It's easier to always find books like that. And Blue One Ink is the publisher. So Blue One Ink के इसमें भी आप जाओगे. If you go to their Twitter handle, Facebook page, anywhere you go, you will get, because they have put up a post. आदि भाई के वहाँ पे जाओ. आदि भाई के Twitter handle पे जाओ, DevTalks में जाओ. आदि has shared, so you can just click on that and take you to that Amazon का this thing. Site. You can get it there, as well as जैसी launch होगी, Arindam bhai will be on the platform to talk about it as well. Oh yes. Oh yes. And we shall cover it as well. So सबसे ज़्यादा request है मेरा, सबसे भाई वीडियो को like जरूर करिए, subscribe करिए, and we will, please share this video with your friends and families. I was checking my statistics, by the way. From an average of 31% not subscribed, that average has gone up to 35. So yeah, if you're watching the videos, liking the videos, subscribe to the videos. Simple as that. Not much to ask for. 35% is a bit unfair, so please, a lot of you I know sit and watch on your TV. Just take bari phone pe khol ke subscribe kar do yaar. It'll really help out the channel. So thank you so much. And of course, if you can, do contribute towards this effort. QR code, PayPal, super sticker, super charge, become members, or you can check out the store as well. All the links are below the video. Let's go. Sabse pehle, Basudev ji, thank you so much for becoming a member. Right, Ravi ji, thank you. Aadi and Arindam, do you both see a continuum by USA to roll back China along with regress India before its rise? So US is not to repeat the China mistake again. I think China we've spoken about. Let's talk about India. I've said that it's a kneecapping strategy. They want to kneecap you at about $5, $6, $7 trillion, so that आपका अभी 2,500 तक per capita है, take it up to about $6,000, $8,000, $10,000. Doesn't even matter to them. But वो 6-7 के आसपास आपको रोकना चाहते हैं. That's my opinion. What's yours? My view is not going into the specifics. What I see is that United States views India as a bloc which resembles European Union, and United States wants to shape India along that particular fashion and manner. What is European Union today? A bunch of states with no political say, with no political weight, with no political power. They have kept existing from 1945 just as a trading bloc. Lot of paisa, lot of money changes hand, lot of money to be made. Real world mein there is no power. India, because of, and if you look at India from that point of view, and if you then look at the different secessionist movement, today you've got Awaz coming from South, you've got Awaz coming from Northeast, you've got Awaz coming from Punjab, a lot of this. It is not saying that India is going to, they want it to balkanize India. They just want to keep India like that, and if possible, andar mein break it down into semi-autonomous regions, so that there's this central power which India wields today, doesn't stay, and India remains, as a sort of a fragmented European Union of a kind of a thing under the complete control of United States, doing a vibrant, existing in a very vibrant consumer-driven trading market, but no political, no martial will and power of its own. That's what I see. That's what United States wants. That's what it kind of seems, yeah. Absolutely correct. Okay, let's say Trishul RDS by Kedar Keshkarji. Thank you. He says, if China gets involved in the conflict with its neighbor, and China will not be in a position to support Russia against Ukraine, is this why US is trying to engage China by one of its neighbors? Quite possible. Quite possible. And एक और बात भी है कि United States at this point in time, I'm not talking about Donald Trump, I'm talking about the United States establishment, assuming that it is still the same. Their focus is definitely, मतलब focus का अगर बात करेंगे तो रशिया से ज्यादा ये लोग का चाइना का फोकस है, और चाइना रशिया को हेल्प कर रहा है, नॉट they're providing covert help. They're not helping them directly, like a North Korea is helping, like a Iran is helping Russia. They are not providing that kind of a direct help. Yes, they're buying a lot of oil and all, which they're anyway going to do, even if there is a problem in their neighborhood in a Cambodia or a Vietnam or a Thailand. So it is not so much to shift China's focus from Russia,
but it is eventually to get कल को अगर मतलब get China entangled in a mess, कल को अगर रशिया यूक्रेन खत्म भी हो गया ना, तो भी ये लोग चाइना को एनसर्कल करेंगे और चाइना के आसपास में ये लोग प्रॉब्लम खड़ा करेंगे, वेदर इट्स थ्रू टिबेटियन बुद्धिस्ट, वेदर इट्स थ्रू विगर मुस्लिम्स, वेदर इट्स थ्रू सेंट्रल एशिया, व्हाटएवर, वेदर इट्स थ्रू क्या बोलते हैं वो, ताइवान, व्हाटएवर, दे आर गोइंग टू ट्राई एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर चाइना irrespective of what happens to Russia. True. Vignesh bhai, thank you. Very nice show. Aadi, thank you. Waiting for the book release of Arindam. Thank you. Ashwin ji, thank you. You say, do you think Russia or China will counter Rimland by doing something in the US background? Maybe not like the Cuban Missile Crisis, but some other type of mischief. I don't know. I You mean, know, before you jump in, you know, the rest of the countries are pretty tolerant of this nonsense because they've kind of figured how to deal with it. US isn't. US will fly off the handle faster than boy. I wish actually that somebody did something, but the problem is, you know, United States is so lucky, and United States has such a blessed geography with sea across both sides and two very compliant neighbors across the other two sides, that it is extremely difficult to create some kind of a physical discomfort for United States, so to speak, unless you are doing a cyber attack or you're doing some tech sabotage or something like that. Then again, United States is exceptionally strong technologically. ये भी देखना है. Okay, so that the one domain which could have been there, that chink in their armor, they are very strong, which is tech and cutting edge tech. अभी आ जाता है physical में तो it looks very difficult as of now. With Canada and Mexico and Atlantic Ocean and Pacific Ocean, it's very difficult. I mean, I think pushing any country for that matter today is anybody that they finger around, it'll just backfire. Yeah, not the smaller ones, but of course the big 3, 4, 5 that are there. Ashwin bhai, once again, thank you. Why US is not activating Uyghurs against China? Oh, they are getting them trained. हाँ, सब करेगा भाई, टाइम आने दो, सब करेगा. ट्रेनिंग चल रही है उनकी, सीरिया में और पाकिस्तान में ट्रेनिंग चल रही है उनकी. And that is just the disruptive part, the radical training you're talking about. There are big time Uyghur asylum seekers who are sheltered in USA, leading a nice life. I mean, media bites and public opinion सब तैयार वो करेंगे, टाइम आने दो. So there are two parts. Let me read it out. We are in a very difficult situation. We choose USA bloc, we lose Russia, and we choose Russia-China bloc. We lose all the investments coming from the West and raise tariffs. Whatever India will do, will it be a win-win for China? No. China is going to lose as it is, yeah, because at the end of it, आपका अगर business move हो रहा है, you know, and a lot of the, you know, investments and stuff like that is already starting to shift. So China is the great loser. Now the point is, how much is the quantum of Chinese loss? What do you think? So I think what the question that he's raised is actually very valid, because see, yeah, if you like I say that, you know, your natural alliance is, if you're India, your natural alliance is to that it is in this region. Your natural alliance is not seeking somebody sitting in Australia and seeking somebody sitting in USA. Ideally, your natural yes. alliance. Ideally, so yeah. Ideally, yeah. But it is not an ideal world. That is what makes it so complex. So if you are going the Russia and the China way, creating a natural alliance, yes, you lose out a lot from the West. Investment छोड़ दो. Investment से ज़्यादा sanction को लेके tension है. और sanction को लेके tension इसीलिए है क्योंकि Indian software and everything is hopelessly dependent upon the West. अपना तो software नहीं है, operating system नहीं है. We don't have anything like that. Russia, China का है, by the way. So they are definitely not going to be that big a loser, and because they have been going on for such a long time. On the other hand, as you very rightly say, if you jump hopelessly, if you tilt hopelessly towards the West, buy F-35, buy this, buy that, move out of that ambit of Russia, then you have a problem. So it is an extremely difficult situation, partially been made because we have traditionally been non-aligned and we have been
क्या बोल सकते हैं कि we've been futuristic enough to think कि अच्छा दुनिया में एक ऐसा टाइम आएगा when all the enmities will cease and it will be strict transactional block, जो कि होने वाला नहीं है. So which is partially our fault, you could say. That's also interesting. हाँ. Interesting. Correct? I mean, yeah. Continue. That's very interesting. Having said that, eventually, I don't know which way India is going to tilt, the Russia-China way or the Western way. Eventually, when if we do tilt at all, or maybe we are just sitting, biding for some time and waiting across for a time in future where there is true multipolarity, where no one cardholder is, is the prime player and there are several players. Whatever happens, considering that it's a bipolar structure that remains inevitable in the near future and India has to choose sides, either you go the US way or you go the Russia-China way, whatever you do. देखो, आप जब डिसीजन ले रहे हो तो पिछले 15-20 साल, 100 साल, 50 साल जितना भी है जिसके ऊपर ये सिस्टम सर्वाइव कर रहा है, वहां तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करना ही होगा. So you have to, it's like if every time so if you are very focused on your dream, you have to really make up your mind on what are the sacrifices that you're going to make to achieve that dream. So whichever you choose, you have to make your sacrifices. Yeah, that's there. My main point is I don't think we will choose sides, right? We will tilt probably a little extra towards the West, while tilting towards Russia as well, but not Russia-China. And you will use China as a hedging pin to kind of play the game with the West, because they will get very upset every time you deal with China. So I think that's the game that is going to open out, and that's where China is also interested to do that, and you're also interested to do that, and that's why you see the conversation kind of building up between the two countries. Yeah. So that's what I think. Okay, ISKP is another CIA ISI scam to radicalize and recruit people from India. Mainly heard people who travel to Iran from India getting disappeared too. Not just India, by everywhere. What will be the period of disruption that India should expect on itself, especially since the neighborhood is burning anyway? I didn't get the question. Period when can we expect, or how long is this going to go on? What's the question? How long will this go on? Aadi, no idea, frankly. I mean, the way things are, it can go on for a long time. If there is disruption, देखो, ऐसे बोल के तो disruption नहीं आएंगे कि हाँ भाई आ गए हम लोग disruption बन के अभी 10 साल रहेंगे, ऐसे बोल के नहीं आएंगे. A lot of what you're seeing today is disruption already. A lot of political parties and the kind of soundbite that they give to the news media is disruption. A lot of what is happening in the Northeast is disruption. A lot of election interference that you see and all this jhol that keeps happening with the voter list and all is disruption. So the disruption is already there. You're facing your disruption. How long this is going to go on? It's a very difficult prediction to make, actually. I wouldn't want to be an astrologer here. I stick my neck out. I'd say 5 years. 5 years. 5 years. Okay. At the minimum. At the minimum. Because, if you look at the First and the Second World War, which are basically continuums, right? They lost money in the middle and they didn't have the money to fight. That's why you went into the depression. There were too many bubbles, so they had to reset that and then fight again. Yeah. That went on from, let's say, 1914 till 1945. 45. 15 से लेके 45 तक. So that's about 30 years. Yeah. Now, 30 साल आज की दुनिया के अंदर, where everything is much faster, is social media, there's that. If you kind of put it into a 1/5 sort of a thing, because time taken is much lesser for everything, I'm saying about 5 to 7 years. So, yeah, that's my opinion. And last one by Mallikarjunji, he says, thank you firstly. It's choice between American dairy products versus Bharat. Adulterated chemical milk products. Pure clean milk for infants is not available in Bharat. Very sad. Sir, pure clean milk is available not in the cities, but you can go to the
I mean, smaller cities like where I stay, beautiful, fantastic, clean milk, no chemicals, very good. And The big thing, इसका भी that's एक how it चीज is. है, इसका भी एक चीज है आदि, मैं कहना चाहता हूँ कि यार इंडिया में ठीक है क्लीन मिल्क नहीं है, बट इट इज अप टू अस ना. क्लीन मिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड समवेयर, वी आर अडल्टरेटिंग इट, तो प्रॉब्लम इज विद अस. इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका से मिल्क लाए, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि यू क्रैक डाउन ऑन दोज पीपल हु आर अडल्टरेटिंग मिल्क एंड क्रिएट योर पुट योर सिस्टम्स इन प्लेस सो दैट मिल्क इज नॉट अडल्टरेटेड. ऐसा तो नहीं कि इंडिया में मतलब मिल्क पैदा ही होता है अडल्टरेटेड. इट इज नॉट दैट. समबडी इज practicing unfair business, तो उसको आप अगर चेक कर सकते हो, responsibility is with us. Well said. That is well said. And I'll add to that one thing, very, very simple, that, see, rapid urbanization always does that. ठीक है, rapid urbanization जहां पर भी आपको होगी, you will see all this happening. And rapid urbanization के अंदर हमेशा ये problem रहती है. So आपकी population reduction होगा, ये सब चीजें होंगी आपकी. So you need to figure out where you want to kind of, which side you want to go. And that's why, if you notice, the government keeps saying rural economy, rural economy, rural economy. आप rural economy की तरफ जाओ, your urbanization will, your rapid urbanization will reduce. Your, what do you call, this thing will reduce your, your demographic change will reduce quite a bit. So this is the point. You get your rural economies back in shape, and trust you me, the demographic balancing, your future extension of your demographics, as well as health and this and that, will become much better. Instead of everybody rushing from towns to cities, we should have a population of the rural centers. वो बंद हो जाएगा तुम्हारा. So that needs to be there, and that's why if you notice, PM Modi साहब हमेशा बोलते हैं, banking needs to be rural. ठीक है, and the job opportunity has to be at the last point, where initiatives like Drone Didi and all that. Now you can keep saying this is not working and all that stuff. That's a different discussion altogether. I'm talking about the concept. Concept wise, Drone Didi and rural के अंदर भी जो चीजें इन लोगों ने करी हैं, they are fantastic, and that's what is the base to the future. Now, how well is it adopted? I know for a fact Drone Didi and all these things have been adopted pretty well. If that thing actually goes and settles in, you will have lesser people wanting to move to the cities. You have lesser people wanting to move to the cities, you have more children. So when you have more children, then things kind of balance out automatically. The point is that we need to not urbanize so fast, because look at China. They made that mistake of urbanizing, and it just went for a toss. All right, thank you so much for watching. Whose job? The government knows. I can't see it on my system, but I can see it on my side. Mallikarjunji, thank you. He says, whose job? Government knows, yet nothing done. So it may be in your priority of the list, maybe not in theirs. That's how it is, They say, right, I'm not equating government with God, but just to give an example, they say that God answers every prayer, right? Sometimes the answer is no. So it may be in our priority, something, but they're looking at it in a different way. I can't answer for them, so not possible. All right, Arindam bhai, thank you so much, yeah. And Thank you. टाइम निकालो, एटलीस्ट ये अड्डा एटलीस्ट जल्दी हमको करना चाहिए. आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा तुम्हारा बिजीनेस था, थोड़ा मेरा ट्रैवलिंग अभी भी चल रहा है, सो आई एम इन बिटवीन टूर्स एक्चुअली. तो we'll figure something out. All we'll right, do that. Next अड्डा is once the book is out. अभी तो प्री ऑर्डर में 23-24 अगस्त को मिल रहा है. Once it is out, then let's sit one day. Awesome. Chalo, thank you so much, guys. Thank you. And we shall see you at night. Namaskar. Namaste. Jai Guru.